एंजेला तनेजा। तो ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि वक्ताओं के लिए भी समय चाहिए और थोड़ा सा भी चर्चा अंत में खुली चर्चा के लिए भी थोड़ा समय बच जाए। अम्बरीश भाई ने मुख्य बिंदु तो रखे हैं, लेकिन हम ये चर्चा इस समय क्या मुख्य बिंदु हैं। एक तरफ से जैसे अम्बरीश भाई ने भी बोला, तीन किस्म के फिनोमेना हैं जिनके साथ एंगेजमेंट की जरूरत है। एक तरफ से है प्राइवेट स्कूल, जो विशेषतर इस परिप्रेक्ष्य में जिनका असर दिखता है। एक लार्ज स्केल सर्वे के अंदर जो वर्तमान समय के आंकड़ों के अनुसार 83% पेरेंट्स का कहते हैं कि जिनके बच्चे निजी स्कूल में जाते हैं कि उनके फीस के ऊपर सरकार ने अंकुश लगाने के लिए इस मुसीबत के दौर में अपर्याप्त एम्फोसिस दिया है। It needs 83% of parents ऑडियंस से गुजारिश है कि थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी का मिक्स चले, जैसे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ी सी खिचड़ी भाषा चलेगी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, so people, at least both speakers of both languages, at least get an essence of what is being said. तो मुद्दे क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं एक तरफ से। पेंडेमिक के बीच में प्राइवेट स्कूलों की मिसबिहेवियर के केसेस आ रहे हैं। फीस के ऊपर लगभग ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव हैड सम लेजिस्लेशन टू और गवर्नमेंट ऑर्डर्स। आखिरी बार जब गिना था तो कम से कम 13 स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड टू रेगुलेट फीस, लार्जली फीस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। लेकिन उस वास्तविकता के बावजूद 83% तकरीबन पेरेंट्स लार्ज के सर्वेज के अनुसार, हमारे अनुभव के अनुसार नहीं परंतु सर्वेज के अनुसार, 83% of parents based on surveys show that they are unhappy with the level of regulation that have been put in place at the time of the pandemic, जिसको कहते हैं जो मुसीबत में साथ देता है वही दोस्त होता है। जिसने जो मुसीबत में साथ नहीं देता है वो शायद आपका दोस्त नहीं है। So therefore, given the reality of the fact that private schools are not responding to the needs of parents at this dire time of need, they're probably reflecting like never before how exclusionary they are. At the same time, there are public-private partnerships. There have always been public-private partnerships. Let's also say not all public-private partnerships by definition are bad. Problem comes when public-private partnerships are based on greed, and deliver substandard services at high cost. Therefore, Visheshtar is there are some high-profile instances. One clear PPP that the government has taken action on, or the forum has taken action on, is the STARS project, which is a project funded by the World Bank, or rather part funded by the World Bank, which runs the risk of introducing almost across the board partnerships with the private sector and the non-state sector. So therefore, even at this time in need, there are corporate partnerships that are coming up. तीसरा जो पहलू है is the advice that corporates give for reforming the education system. Again, anyone is free to give advice. Question is this advice grounded in a human rights based framing of what education should be? क्या वो सलाह जो कॉर्पोरेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, चाहे वो साथी प्रोजेक्ट हो जिसके तहत स्कूल बंद हुए हैं हमारे भारत भर में लगभग 1 लाख के करीब, या अन्य
पब्लिक प्राइवेट अन्य जो एडवाइस कॉर्पोरेट सेक्टर के से सरकार को मिलती है, वो क्या वो शिक्षा के अधिकार के अनुसार दी जा रही है कि उनके निजी स्वार्थ या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के आधार पर दी जा रही है. So therefore it's therefore it's essential to therefore it's an issue overall, but it's nowhere more critical than during the pandemic. सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा है प्राइवेट स्कूल के रेगुलेशन के लिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पक्ष में नहीं दी है प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स के, लेकिन तभी भी मसला अभी भी वहीं पर है. देयर नीड्स टू बी मोर रेगुलेशन. आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा के लिए एकमात्र जो फाइनेंशियल एलोकेशन था वो प्राइवेट स्कूल की एक्सपेंशन के लिए था, और साथ में वर्ल्ड बैंक का लोन अपने आप में एक अर्जेंसी प्रदान करता है मुद्दे को. Therefore there's a need to discuss this now, because the COVID pandemic creates issues of regulation, challenges of regulation of private schools. It's essential to talk about this now, because Atmanirbhar, the only financial allocation for education explicitly announced in the Atmanirbhar package is for private schools. It's essential to talk about this now, because the World Bank loan for 6 states, which includes public-private partnerships across the board, is something will be rolled out now. At the same time, it's essential to talk about this now, because worldwide there is a pushback against non-human rights based modes of partnerships and behavior of the private sector. चाहे वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अभिजान प्रिंसिपल्स का एंडोर्समेंट हो, या अंतरराष्ट्रीय जो फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर शिक्षा के अंदर मुनाफा कमाने के ऊपर अंकुश लगने चाहिए. Therefore that's the context in which we are having this discussion. हमारे साथ तीन एक्सपर्ट जरूर हैं, लेकिन साथ में तीन डोमेन्स के भी एक्सपर्ट्स हैं, 3 किस्म के मुद्दों पे काम करने वाले भी लोग हैं. So therefore Kiran would as in that sense as part of comes with a history of extended engagement with civil society, therefore, and as well as quasi-judiciary bodies in that sense. So therefore, she offers one lens at the issue. Pradeep ji is ultimately represents the voice of parents at the time of the pandemic, and otherwise Anupam जी लोक शिक्षक मंच से जुड़ी हैं, तो वो शिक्षकों के भी क्या सवाल हैं इस मुसीबत के बीच में, उनके ऊपर भी टीचर्स पर्सपेक्टिव भी रख सकती हैं इस मुद्दे के ऊपर. Therefore, without more introduction, over to you, Kiran, with what do you see as the role of non-state actors in education, and what are the trends that you related to it that you observe? थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर.